मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। Greetings in the name of Jesus Christ, and may the Lord bless you all. खुदा अपने काम मुख्तलिफ लोगों से और मुख्तलिफ जगहों से अपने लोगों को बुलाता है और अपनी खिदमत को सरअंजाम देता है। I believe that God used different kind of people from different places, and He uses them for His glory. आज मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारे भाई ब्रदर शॉन हमारे साथ हैं। Today I'm so thankful that our brother Shawn, is with us. बहुत बिजी पर्सन है, बहुत ही मसरूफ शख्सियत है वो। He's very busy, and he's doing so much for the kingdom of God. बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के साथ वो काम कर रहे हैं और रेडियो स्टेशन को भी रन कर रहे हैं। He is running a radio station. They have a beautiful church. और वो बहुत खुदा के अजीम खादिम के साथ खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। And a great man of God, he is working with him. और आज मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं कि खुदा ने ब्रदर शॉन को यहाँ मेरे इस छोटे से स्टूडियो में आने के लिए वक्त दिया है। And I'm so happy and glad that God gave us this chance for us to work together and for him to come here. और जब मैंने उनसे बातचीत की और उनको मिला हूं तो मैं बहुत बरकत महसूस करता हूं अपने आप को उनके साथ बातचीत करके। And after talking to him, I always am so glad and blessed. और मैं चाहता हूं कि आप सब भी उनकी गुफ्तगू के वसीला से, उनकी टेस्टमनी के वसीला से बरकत पाएं और खुदा उनके नाम को जलाल दें। And I pray that may all of you be blessed through his testimony and the message he has for us today. तो आप सबकी पुरजोश तालियों में और आपके खूबसूरत नारों में हम उनको दावत देते हैं। सो ब्रदर शॉन, आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। And we welcome Brother Shawn here. Yes sir, welcome. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Please you talk to people. Well, it's good to be here today. हाँ, मैं यहाँ पे आके आज बहुत खुश हूँ। I am so glad that God has given me the honor मुझे बहुत खुशी है कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा to come and share with you my life and what God has done in my life. कि मैं आऊँ और मैं आप सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। It's definitely not by any of my being ये मेरी वजह से नहीं है that I exist today. कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस दुनिया में जिंदा हूँ। You see, I lived a very hard life at a young age. मैंने जब मैं बचपन में था तो मैंने एक बहुत मुश्किल जिंदगी बसर की। I am 57 years of age as of today. आज मैं 97 साल का हूँ, 57 का हूँ। And God has definitely blessed my life. और खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है। But I want to let you know something today. लेकिन आज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ That my life has not always been like this. लेकिन मेरी जिंदगी हमेशा इस तरह नहीं थी। I was born in Seaside, California. मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ I had 4 older brothers, और मेरे बड़े 4 भाई थे a single mother. और हमारी माँ I had 3 older brothers, I'm sorry. हम लोग मेरे 3 बड़े भाई थे 1 younger brother. और एक छोटा भाई था। 3 of those brothers plus myself वो मेरे 3 भाई और मैं lived in the same house. हम एक ही घर में रहते थे। At the age of 5, जब मैं 5 साल का था we moved from the city I was born in तो जहाँ पे मैं पैदा हुआ था वहाँ से to San Francisco, California. तो हम लोग सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में चले गए। It was there at the young ages between 5 and 6 years old. वहाँ पे जब मैं 5 या 6 साल का था My parents had my mom, who was single at the time. और मेरी माँ जो सिंगल थी उस वक्त, We lived with one of my aunts and 7 of her children. तो हम सब मेरी माँ की बहन के साथ रहते थे। At this time, we lived around a group known as the Black Panthers. और हम उस एक ग्रुप के पास रहते थे जिनको ब्लैक पैंथर्स के नाम से जाना जाता था। And this is a group that's well known in history, it's well known in study, and it's well known in our culture as black people. और ये जो ग्रुप है इसको बहुत अच्छे से पहचाना जाता है अमेरिका में और ब्लैक पीपल में। In this upbringing, there was a lot of partying, there was a lot of alcohol, there was a lot of just constant, I don't want to say chaos, but a constant life outside of the things of God. और ये जो जिंदगी मैं जी रहा था ये बहुत ही अलग तरह की जिंदगी थी, बहुत ही दुनियावी जिंदगी थी। And around the age of 7, my mother decided to move back to Seaside, California.
जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरी माँ ने ये फैसला लिया कि हम दोबारा कैलिफोर्निया में चले जाएं। And we moved to a place called the Testomoney Manor, which were projects. और हम लोग एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे सॉरी what was that? Projects, the projects. और वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए। So here from the ages of maybe 7 to around 13, we lived with our mother, my brothers, and my mom was still a single parent. और यहाँ पे जब मैं 13 साल का हो गया हम अभी भी मैं अपने भाइयों के साथ रह रहा था और मेरी जो माँ थी वो अभी भी सिंगल थी। And at this age, things they were fairly well. There was things in my life that needed to be fixed. मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थी जिनको बदलने की जरूरत थी। And I believe what I know now because there was a call on my life. The enemy started working in my life at an early age. और मुझे मेरा ईमान है क्योंकि मेरी जिंदगी पर खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए तभी से बुलाया हुआ था, इसलिए शैतान ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। At the age when I was in the 3rd grade, I believe it was the very first time that I'd actually stolen from someone. और जब मैं तीसरे ग्रेड में था, तीसरी क्लास में था, वो पहली दफा थी जब मैंने किसी से चोरी की। I'd actually went into the purse of one of my 3rd grade teachers and stole $60. और मैंने अपने जो मेरे यहाँ तक के मेरे जो उस्ताद थे, मेरे टीचर थे, उनसे मैंने $60 चोरी कर लिए। Not knowing that this would be the platform from which the devil would launch a major attack in my life. और मुझे नहीं पता था कि इसी चीज को शैतान इस्तेमाल करेगा मेरे खिलाफ। From there, it progressed into stealing from family, from my mother, and from other people around me. और यहाँ से ये जो चोरी थी, यहाँ से मेरी चोरी की आदत बढ़ गई और मैंने अपनी माँ से, अपने घर वालों से चोरियां करना शुरू कर दी। And at an early age, this had become a regular part of my life. और जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। So around the age of 13, I hung out a lot with people in the projects that I lived with and so on. और जब मैं इस उम्र तक पहुंचा तो मैं और ऐसे लोगों के साथ मेरी बातचीत होना शुरू हो गई। And to digress a minute, it was in the 6th grade, once I started stealing, then in the 6th grade, I started smoking cigarettes. और जब मैं छठे क्लास में था तो मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दी। At this time, my mother had remarried. She'd given her life back to God. और यहाँ पे मेरी माँ ने दोबारा से शादी कर ली और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। And she had remarried my 3 older brothers' father. और उन्होंने हमारे जो मेरे बड़े 3 भाइयों के बाप थे उनसे दोबारा से शादी कर ली। So in the 6th grade, it was the cigarettes that belonged to my father. और छठे जब मैं 6वीं क्लास में था तो जो सिगरेट्स मेरा बाप पीता था That I had started smoking. और वो मैंने पीना शुरू कर दी। As we progressed, at the age of 13 years old, when I got into junior high school, और जब मैं हाई स्कूल में आया और मैं जूनियर था, surrounded by so many other elements, और बाकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी। at 13 years old was the first time और जब मैं 13 साल का था वो मेरा पहला टाइम था that I started smoking marijuana. और तब मैंने marijuana भी स्मोक करना शुरू कर दी। And as life began to go on between the ages of 13 to 16, और जब मैं 13 से 16 साल का हुआ और चीज़ें बदलना शुरू हुई, because of these gates that I opened up in my life, और ये जो दरवाजे मैंने अपनी जिंदगी में खोले हुए थे, several other things began to take place in my life on a day-to-day basis. और उन दरवाजों से और ज़्यादा चीज़ें जो है आना शुरू हो गई। By the age of 15 years old, I had started drinking. 15 साल की उम्र में मैंने जब तक मैं 15 साल का हुआ मैं शराब पीता था। I had started hanging out in places that I didn't need to be at. मैं ऐसी जगह पे ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता था जहाँ पे मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। So in doing so, और ये करते हुए I surrounded myself with people और ये करते हुए मैंने अपने आप को एक ऐसे लोगों के साथ मैंने जोड़ लिया that were like-minded. जो कि मेरे दिमाग की मेरे साथ मिलते जुलते थे। 15 years old, in 1979, 1980, I moved into high school. जब मैं 15 साल का था मैं हाई स्कूल में चला गया And this was the time where things really began to take a drastic turn in my life. और हाई स्कूल में चीजें बहुत ज्यादा बदलना शुरू होगी मेरे लिए। Being a very good athlete मैं बहुत अच्छा एथलीट था and being able to do the schoolwork with no problem,
और मैं स्कूल का काम बहुत अच्छे से करता था। I found it easier just to do what I wanted to do. तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। So as I stated, I started drinking, मैं वो करना शुरू कर दिया जो मैं करना चाहता था, जैसे कि मैंने शराब पीना शुरू कर दी started smoking more marijuana more than normal. और मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दी। Then I found myself at a point to where I was no longer even attending school और फिर मैंने अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाया जहाँ पे मैं स्कूल भी नहीं जा रहा था, on a regular basis. रोज स्कूल भी नहीं जा रहा था। This led me to hanging out a lot outside of school. और इसकी वजह से मैं स्कूल से बाहर ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। And then within myself, the atmosphere on the outside became embedded within me. और बाहर का जो माहौल था उसको मैंने अपना लिया And this is the place from which I began to live. और फिर मैं उसी जगह से अपनी जिंदगी मैंने बसर करना शुरू कर दी। At the age of 16 years old, I was hanging out with some friends after school. और जब मैं 16 साल का था और एक दिन ऐसा था कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ मिल रहा था And we were smoking weed and drinking alcohol. और हम एक साथ बैठे और हमने शराब पीना शुरू कर दी, हमने ड्रग्स लेना शुरू कर दी। And we were actually at this time, cocaine had taken a place in my life. और यहाँ इस पॉइंट पे मैंने कोकेन भी लेना शुरू कर दी जो कि बहुत खतरनाक ड्रग है। So on that day, a friend and I left the house to go to the store to purchase more beer. और उस दिन मैं और मेरा एक दोस्त हम लोगों ने उस जगह को छोड़ा और हम एक स्टोर पे जा रहे थे जहाँ से हमने और चीजें खरीदनी थी। While we were at the store, we saw a gentleman in whom at this time we jumped and we beat him up very badly. और वहाँ पे स्टोर पे हमें एक ऐसा आदमी मिला जिसको हमने काफी मारा था। One of the worst decisions I've ever made in my life. और उसको मारने का जो मेरा फैसला था वो बहुत बुरा फैसला था मेरी जिंदगी का। Well, it came to the point that one of the guys that we were with, father was a sheriff. और क्योंकि उसका हमारा जो एक दोस्त था उसका जो बाप था वो एक पुलिस वाला था। So when this all came out, he told his father what happened. जब ये सब कुछ हो गया तो उसने अपने बाप को बताया कि क्या हो रहा है। So the police came and arrested both my friend and I. और उस पुलिस वाले ने वो आया और उसने मुझे और मेरे दोस्त को अरेस्ट कर लिया। And when it came down to it, the judge gave me 5 years in California juvenile detention. और जज ने मुझे कैलिफोर्निया में जेल में डाल दिया 5 साल के लिए। So for the first crime at 17 years old that I ever committed in my life, तो मेरा जो पहला क्राइम था वो 17 साल की उम्र में मैंने they gave me 5 years. उन्होंने मुझे 5 साल की जेल दे दी। But today I know that this wasn't the plan of God for my life. लेकिन आज मुझे पता है कि मेरी जिंदगी का प्लान जो था खुदा के लिए ये नहीं था। While I was there, I got sick. और जब मैं जेल में था तो मैं बीमार हो गया And instead of doing 5 years, और 5 साल की बजाय I only did 6 months. और उन्होंने सिर्फ मुझे 6 महीने रखा। So once I got out of this place, जब मैं इस जगह से निकल गया still not really being able to understand the plan of God for my life, और अभी भी मेरे जहन को अकल नहीं आई थी, मैंने वो समझना शुरू नहीं किया था कि खुदा का प्लान मेरी जिंदगी के लिए क्या है। I went right back to the same lifestyle. तो मैं वापस उसी जगह पर चला गया जहाँ से मुझे निकाला गया था। But what happened is that it began to get worse. लेकिन क्या हुआ कि वो लाइफस्टाइल जो मैं जी रहा था, वो सब चीजें जो मैं कर रहा था जेल में जाने से पहले, वो और भी ज्यादा बढ़ गई। By this time it was the mid-80s. और इस वक्त पे जो अमेरिका पे मिड 80s का टाइम था And crack cocaine had become the thing to do at this day for the drug world. और जब मैं इस वक्त से गुजर रहा था तो उस वक्त जो कोकेन थी वो बहुत मशहूर थी। So in 1988, 1980 में when my oldest daughter was born in March of that year, 1988 में जब मेरी सबसे बड़ी बेटी पैदा हुई, this was the year that I started smoking crack cocaine. और तब मैंने क्रैक कोकेन जो कि और भी खतरनाक ड्रग थी वो लेना शुरू कर दी। And once I started smoking crack cocaine, my life began a journey that was destructive. जब मैंने वो शुरू कर दी तो मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। It cost me my dignity, it cost me my daughter, and it cost me several decades of my life. इसने मेरे जिंदगी के बहुत सारे साल ले लिए, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब कुछ चले गई।
Several other addictions began to play a part of my life. I became addicted to stealing. और बहुत ज़्यादा जो addictions थी वो मुझे लग गई. मैंने चोरी करना शुरू कर दी. Addicted to pornography. मुझे और pornography जो थी वो उसकी addiction हो गई. Just addicted to lying and deceptive lifestyles in general. चोरियां, चकारियां, झूठ बोलना और बहुत बहुत ज़्यादा और गलत चीज़ें. There were several times where my life was in harm's way. और बहुत ऐसे टाइम थे जब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी. Being jumped and being shot at. मुझे गोली बच सकती थी, मैं मर सकता था, कुछ भी हो सकता था. And just living a life on a day-to-day basis that was surrounded by death. और मैं हर रोज एक ऐसी जिंदगी जीता था जो कि मौत से भरी हुई थी. So after about 10 or 15 years, maybe about 20 years of this lifestyle, इस जिंदगी को 15 से 20 साल जीने के बाद it was really at a point where I needed to make a decision what my life was going to be. और आखिरकार एक ऐसी जगह पर मैं पहुंचा जहां पे मैंने मेरी जिंदगी को मुझे एक फैसला लेना था कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है. As hard as I would try time and time again, जितनी भी मैंने कोशिश की बार बार my life seemed to never change. मेरी जिंदगी कभी भी बदलती नहीं थी. So in 1998, I made a decision to leave the state of California. So 1988 में मैंने ये फैसला 98. लिया. Sorry. 98. 1998 में मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा और मैंने कैलिफोर्निया को छोड़ने का फैसला लिया. And when I left there, I was still using drugs and alcohol, and my parents had left and moved out to Indiana, so I came out this way. So जब मैं वहाँ से निकला, मैं तब भी ड्रग्स ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, और मेरे जो माँ बाप थे वो इंडियाना में आ गए और मैं भी इसी तरफ को आ गया. And then it was maybe 10, maybe 15 more years that I ran in that same lifestyle of drugs and alcohol here in the state of Indiana. और फिर इंडियाना में भी रहते हुए मैं 10 से 15 साल उसी जिंदगी में जीता रहा, उसी के साथ जूझता रहा. I had been in and out of rehab services. I've been in and out of rehab homes. और मैं उस जगह से मैं रिहाब सेंटर्स में गया, वहाँ पे मुझे डाला गया, मैं निकला वहाँ से, मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को बदल सकूं. And it had looked like as if I'd come to the resolve that my life was never going to change. और ऐसा लग रहा था मैं कि मेरी जिंदगी जो है वो कभी भी बदल नहीं सकती. But one day when I was out all night getting high, लेकिन एक दिन जब मैं पूरी तरह शराब मैंने पी हुई थी, मैंने ड्रग्स ली हुई थी, and I had no more money to buy no more crack cocaine, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं और खरीद सकूं, I went to the store and I bought some alcohol and I just drank it until I was obliviously drunk. तो मैं स्टोर पे गया और मैंने सिर्फ शराब खरीदी और मैंने इतना पी कि जब तक मुझे होश नहीं रही. And it was at this point that I had made the decision that I cannot go on any further. और अब इस वक्त में मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं आगे नहीं जा सकता. I had decided that I was in and out of church. I'd preach one day and fall the next day. So I decided that this night I was going to take my life. तो मैंने इस वक्त सोच लिया कि मैं चर्च जाता हूँ, निकल आता हूँ, प्रीच करता हूँ, फिर गिर जाता हूँ, मैं रिहाब सेंटर्स में जाता हूँ, वहाँ पे भी मेरी कोई मदद नहीं होती. तो मैंने इस रात को सोच लिया कि मैंने अपनी जिंदगी ले लेनी है, मैंने अपने आप को मार देना है. And the date was August the 14th, 2017. जो दिन था वो था अगस्त 14 को मैंने ये फैसला लिया कि मैंने अपने आप को मार देना है. I'm sorry. It was August the 17th, 2014. 2014 अगस्त उसकी 17 तारीख को मैंने ये फैसला लिया कि मैंने अपने आप को मार देना है. I was laying in the middle of my living room floor. और मैं जमीन पर लेटा हुआ था. And I was drunk. और मुझे कोई होश नहीं थी. Contemplating taking my life. और मैं ये सोच रहा था कि मैंने अपने आप को आज मार लेना है. And I heard the Spirit of the Lord. और मैंने खुदा की आवाज सुनी. Say, Shawn, if you don't get up from here. शॉन, अगर तुम यहाँ से नहीं उठोगे. And get some help. और किसी से मदद नहीं मांगोगे. You're going to die right here in the middle of this floor. और तुम्हें इसी जमीन पर लेटे-लेटे मर जाना है. And I jumped to my feet. और मैं उठा. Fully sober. और
बिल्कुल होश में I put on a shirt. I ran down to the nearest store to the phone booth. मैंने अपने कपड़े पहने और मैं जो फोन बूथ था मेरे पास सबसे पास उधर भागा And I called a place called Servants of the Streets Ministry और मैंने एक जगह पर कॉल की जो कि खुदा का काम कर रहे थे that I had been in and out for so many years. जहाँ पे मैं जाता था बाहर निकल आता था उनके साथ काम करता था फिर छोड़ देता था And at that time, Pastor Regina Biella और वहाँ पे जो पास्टर थे answered the phone on a Saturday morning. और उन्होंने जवाब दिया मुझे And I told her, if I don't come to the home, I'm going to die. और मैंने उनको बोला कि अगर मैं आज आपके घर में नहीं आऊंगा तो मैं मर जाऊंगा And she said, I know. And she told me, go home और उन्होंने मुझे बोला कि तू घर जा and do not open the door till you hear someone knock on it. और दरवाजा ना खोलना जब तक तुम किसी को नॉक करते ना सुनो And it was that day, August the 17th, 2014, और उस दिन अगस्त उसकी 17 तारीख 2014 में that God called me in और खुदा ने मुझे बचा लिया from a place of death and destruction उस जगह से जो कि बिल्कुल मौत और तबाही थी and set my life on a path और मुझे एक ऐसी राह पर चलाया that would change the course of my destiny. जो मेरी पूरी जिंदगी को मेरी किस्मत को बदल देगी That was almost 8 years ago. 8 साल पहले की ये बात मैंने आपको बताई है I've never smoked and crack since then. और मैंने कभी भी I've सिगरेट नहीं पी I've never gone back to the lifestyle that he's brought me out of. और 8 साल हो गए हैं मैं कभी उस जगह पर वापस नहीं गया And all the things that had wedged itself in my spirit man, और जो भी चीजें जो मेरी जिंदगी में थी God has delivered me from. खुदा ने मुझे उन सब से आजाद किया So my message for you today is this, आज मेरा पैगाम आपके लिए ये है that God is the same God. खुदा वही खुदा है Yesterday, कल today, आज and forevermore. और अब तक There is no place कोई भी ऐसी जगह नहीं है in your life आपकी जिंदगी में that God cannot reach. जो खुदा आपको जहाँ से बचा नहीं सकता It makes no difference what country you're in. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मुल्क पे हैं It makes no difference what nation you're in. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कौम है It makes no difference what religion you practice. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस खुदा को मानते हैं God can reach you खुदा आप तक पहुंच सकता है in the darkest places of your life. आपकी तारीख जिंदगी में आपकी उन जगहों पे जो जिसको किसी के जो कोई भी नहीं जानता God is a light, खुदा एक जैसा है a light that's eternal. और वो रोशनी है जो कि अब्दी है So I encourage you on this day and this morning तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ to move out from where you are उस जगह से निकले जहाँ पे आप खड़े हुए हैं and move toward God. और खुदा की तरफ भागे God knows exactly who you are. खुदा जानता है कि आप कौन हो He knows exactly where you are. और वो ये भी जानता है कि आप कहाँ हो And his love for you is supplied to you this day. और उसका जो प्यार है That वो no- आप तक पहुँच रहा है आज That no matter what's going on in your life, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है God does not love you more today खुदा आज आपको ज्यादा मोहब्बत नहीं करता than he loved you in the beginning. जितनी उसने आपसे शुरू में की His love is calling to you today. उसकी मोहब्बत उसका प्यार आज आपको बुला रहा है So if you're watching अगर आप देख रहे हैं this interview right now, ये टेस्टिमनी ये इंटरव्यू आज I challenge you मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ to trust God. कि खुदा को पर ईमान रखें And if you're there right now and you're telling yourself, और अगर आप वहाँ पे हमें देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं I want this life change, मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी बदले it's really simple. तो ये बहुत आसान है All you have to do is trust God enough और आपको क्या करना है कि खुदा पर पूरी तरह ईमान रखें to repent before him, और तौबा करें asking to come into your heart दुआ करें कि वो आपकी जिंदगी में आपके दिल में आए and to be the Lord of your life. और आपकी जिंदगी का खुदावंद बने And the change is instant और जो बदलाव है वो फौरन होता है and the life is progressive. और आपकी जिंदगी बदलती है So if you decided to make this decision, तो अगर आज आपने ये फैसला लिया है कि मैंने खुदा के साथ चलना है मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बदले I would love to have the honor तो मुझे बहुत खुशी होगी to lead you into the kingdom of God.
आपके लिए दुआ करने के लिए। And if you're there, it's a simple prayer. अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये बहुत ही आसान सी दुआ है। Just say these words. ये लफ्ज मेरे पीछे बोले। Father God, आय बाप, I acknowledge मैं मानता हूँ that I've lived a life कि मैंने एक ऐसी जिंदगी जी है outside of your glory. जो कि आपके जलाल से बाहर थी। I've heard the testimony मैंने ये गवाही सुनी and I've been moved in my heart और तूने मेरे दिल में काम किया है to accept you कि ताकि मैं तुझे कबूल करूं as my Lord and Savior. अपने खुदावन अपने निजात दहिंदे। So, Father God, I ask you तो आय बाप, मैं तुझसे मांगता हूँ to come into my life. मेरी जिंदगी में आ I renounce all the sin और मैं तमाम गुनाहों से रिहाई चाहता that I've lived in. जो जिसमें मैं जिया हूँ। I ask that you take over my heart और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी जिंदगी को ले and be my Lord and Savior. और मेरा निजात दहिंदा बन। God, I believe that you came in the flesh of a man आय बाप, मैं ईमान रखता हूँ कि तू तू इंसान बनकर इस दुनिया में आया। I believe you died on the cross. मैं मानता हूँ कि तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी सलीब पर दी। I believe they put you in the grave. और मैं जानता हूँ कि तूने अपनी जान मेरे लिए दी। And I believe on the third day और मैं ये भी मानता हूँ कि तीसरे दिन you rose from my sin. तू मेरे गुनाहों के लिए मेरे लिए जी उठा। So, Father, I accept you now आय बाप, मैं तुझे अपनी जिंदगी में as my कबूल करता Lord हूँ and my Savior. मेरे निजात दहिंदे की तरह, मेरे खुदावंद, मेरी जिंदगी के खुदावंद के And I लिए। desire to live a life और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ खुदावंद, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊँ that would bring honor जो तेरे नाम को जलाल, to the blood of your Son, Jesus Christ. तेरे नाम को जलाल दे। Well, bless God. We thank you today for joining us. I thank God for having the opportunity और मैं आप सब खुदा आप सबको बरकत दे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए to share this testimony with you. कि मुझे मिला कि मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। I encourage you to continue मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के साथ चलते रहें to watch this great platform. और ये जो चैनल है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको देखते रहें That Pastor and Miss Smyrna have here on this day. जो पास्टर परवेज और स्मरना जो है यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करते हैं। I pray that if you can, by your love, you would show your support, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इनको सपोर्ट करें, whether it be financial or whether it be just with word and letters. चाहे वो फाइनेंशियल हो या आपके अल्फाज हो। And I share this last statement with you. और मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ There is still power और कि अभी भी ताकत है in the message उस कलाम में, of the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के कलाम में। Thank you so much, and God खुदा bless you. आप सबको बरकत दे।